पाकिस्तान को दूसरी पनडुब्बी, सुरक्षा को चुनौती दे रहा ड्रैगन। वैश्विक नेतृत्व को लेकर चीन बढ़ा रहा भारत की टेंशन। चीन ने पाकिस्तान को दूसरी अत्याधुनिक हंगोर श्रेणी की पनडुब्बी की आपूर्ति की है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती पेश कर सकती है। बता दें कि ड्रैगन पाक को ऐसी 8 हंगोर पनडुब्बी देने वाला है, जो अत्याधुनिक हथियारों और संवेदकों से लैस है। पाक ने चीन के साथ $5 अरब के सौदा किया है। पाकिस्तान ने चीन से 8 हंगोर श्रेणी की पनडुब्बियां खरीदेगा, जिसमें से 4 पनडुब्बियां चीन में बनेंगी, जबकि बाकी का निर्माण कराची में होगा। दरअसल चीन अपनी सैन्य उपस्थिति अरब सागर और हिंद महासागर में बढ़ा रहा है और इस पनडुब्बी सौदे से साफ संकेत मिलता है कि बीजिंग अपने प्रभाव को इस क्षेत्र में विस्तार देने की योजना में है। हंगोर श्रेणी की पनडुब्बी में पानी के भीतर युद्ध की मजबूत क्षमताएं हैं, जिसमें टॉर्पीडो, मिसाइल और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमता शामिल है। इसके साथ ही ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस है, जिससे ये लंबे समय तक छिपकर दुश्मन पर नजर रख सकता है। इस बीच भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि चीन का आर्थिक और सामरिक शक्ति के रूप में उभार भारत के वैश्विक दक्षिण के स्वाभाविक नेता बनने की स्थिति को चुनौती दे सकता है। जनरल द्विवेदी ने भारत को अफ्रीका में संभावनाओं को तलाशने और अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने का सुझाव दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा में उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना चाहिए। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। We are following the dictum. When it comes to security, doing more and doing better is no longer enough. We need to do things differently, and that means thinking differently. Enhancing security today requires reimagining it. We understand that security is about wholesome capability to wage war and deter war. Talking about deterrence, let me put it up front that it is time T deterrence we are talking about and not military deterrence alone. That means diplomacy, information, military, economic, and the new word which I continue to add is the technology. Towards that end, healthy military-civil fusion, of course, Atmanirbhar defense industrial base, dual-use assets at national level, well-informed and empowered decision makers of DIME framework, inclusive approach for citizen warriors play a pivotal role. Bilateral engagements by India has already given good dividends, including way ahead for defense diplomacy and cooperation. Now, to further add to the traditional deterrence, I believe that probably technology prowess has become the new currency of deterrence. Data has become the new capital of trade and security. Therefore, modern deterrence capabilities with centrality of data management, preservation and exchange must be multi-domain, integrating conventional strength with cyber, space, AI and cognitive warfare. So a resilient defense industrial base and adaptive defense architecture will ensure deterrence remains credible in an unpredictable security landscape. And this is what encompasses our framework document referred to as Decade of Transformation 2032, SETU. So now, if I visualize that had General Rawat been here and he was required to give us some kind of a guidelines or the envisaged role of India in the emerging security paradigm with centrality of security forces. So I've just imagined what he would have said and tried to reproduce that, knowing him, whatever I knew of. So he always said moral high ground, Vasudhaiv Kutumbakam. So anti-colonial ally, as seen in case of Mauritius, UK, Chagos archipelago discussion. Champion multi-world order, bandwagoning of nations help in preventing conflict. Thus be part of all framework including SCO, BRICS, Quad, BIMSTEC, Indian Ocean Regional Association, etc., alliances. Reform UN Security Council, you all are well aware, to include Global South representatives. Play an active role in conflict resolution as a negotiator or a mediator, whether it's Ukraine or even Myanmar. Play an active role in harness positive strength of Indian diaspora the world over for causes of humanity. Share common platform for global commons. There is the freedom to use and emerging new non-traditional threats such as climate change, economic migration, etc. Second, be enabler for emergence of global south. Post successful sharing of COVID vaccine with have-nots. Be the leader in sharing again with the have-nots digital resources for better socio-economic development. Be the lead
in peacekeeping operations by virtue of these deployments are mostly in the global south. Now, centrality of military in security. We are the guarantors of national sovereignty as only nation standing strong against 2.5 front threat and also engaging the neighbors with domestic volatility. Responsible military of a nuclear nation advocate nuclear weapons as a political asset only, that is for deterrence purposes, till as long as possible. Lead GWAT, that is global war on terrorism, by virtue of facing it first hand in 3 regions of Jammu Kashmir, Northeast and left-wing extremism. Close cooperation on issues related to inter-exchange, cyber warfare, electronic warfare and weaponization of space. So, as I conclude, I am constantly reminded of General Rawat's advice which said, there is a difference between talk and action. One should only believe in talks when they see action happening on ground. And that's what is the roadmap which has been laid out for the Indian Army. We are endlessly striving to make a difference on ground. I would like to assure you that Indian Army remains aligned and integrated with the national vision and objectives, will surely be self-reliant and future-ready army, which will contribute meaningfully to the aspirations, goals and objectives of a rising India as a net security provider to global security. उन्होंने भारत की भूमिका को वैश्विक शासन में और मजबूत करने की वकालत की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना है कि भारत को वैश्विक संघर्ष समाधान में एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और शांति अभियानों, साथ ही आतंकवाद विरोधी प्रयासों में नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। चीन के पाकिस्तान के साथ बढ़ते सैन्य संबंधों के बीच भारत को अपनी रक्षा रणनीति और वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, ताकि ड्रैगन के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। भारत और चीन रिश्तों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही और लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहे न्यूज इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।